Okay, so we saw so far that P is equal to half, we saw, and we had to get something about Q also, right? Yes, sir. Right, so try doing that, see if you're able to do something there. Uh, the expression that I had gotten for Q was what? One second. सर 2 sin a cos सर क्यू था sin 10 pi by 21 Hmm. cos 11 pi by 21 upon sin pi by 21 Cos 11 pi by 21 upon sine. sin pi by 21 सर हाँ, इसमें so वो प्रोडक्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने. we can do it like 2 and 2, right? यस सर. हाँ सर ये हो गया. और उसके बाद 2 sin a cos b we can write as sin a plus b plus sin a minus b, right? हाँ, यस तो साइन 22 5 सो देखो 21. sin a plus b में sin पाई आ रहा है, राइट? माइनस प्लस sin a माइनस b. सो sin a माइनस b में माइनस पाई बाय 21 आ रहा है, राइट? यस सर. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. आई एम राइटिंग इट एज 2 sin a cos b, ओके? जी सर. And that is equal to sin of a plus b plus sin a minus b. Because I already know that I can see that a plus b is pi, right? तो यहाँ पे नीचे में 2 sin पाई बाय 21 था और ऊपर में ये जीरो हो गया. दिस इज माइनस साइन पाई बाय 21 बाय 2 sin पाई बाय 21, सो माइनस हाफ, राइट? यस सर. 1 आ गया. So p minus q value is going to be 1. जी. So if you are able to use your summation formula, then it is pretty obvious, this one, right? यस सर. यस सर. Okay. गौरव, you not tried these questions, right? 4b के बाकी वाले सब. नहीं उसके बाद ट्राई नहीं किया जाए. Okay, so question number 7. Let's see what is this question 7. In question 7, we have to see 4 sin 27 degree की value लानी है. We have to basically find the value of this and prove that 4 sin 27 degrees is equal to 5 plus root 5 square root of that, square root of 5 plus root 5, and then there is minus square root of 3 minus root 5. So you have to think of some technique how by which you can get this angle, 27 degree angle somehow, right? सर 45 minus 18. That is one way to do it. Another way to do it is to not try to find 4 sin 27, try to find 16 sin square 27. 16 sin square 20. Why? Because sin square 27 को 54 में convert कर देंगे. यस सर. Because we know that 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta, और right? 2 We can say that हाँ 16 sin square 27 is 8 times 2 sin square 27 is going to be 1 minus cos 54, right? हाँ यस यस. सर. तो एक वैल्यू हम लोग को याद रखनी है sin 54 या cos 54, because we know already sin 18 or cos 18. So sin 18 or cos 36, I think, right? This is root 5 plus 1 by 4, I think, and this is root 5 minus 1 by 4, I think. तुम लोगों को बोला था ना कि एक एक वैल्यू याद रखना है 18 और 36 यस का. सर. तो दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू याद है, और दोनों में से दोनों एंगल्स की एक एक वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट? सो यस सर. देन यू विल ऑटोमेटिकली नो cos 36. So obviously cos 36 and cos 54 you can find them, हाँ right? यस सर. And after that the question is over because you just put the value and you have to take the square root of this whole thing, right? यस सर. Do you understand what I'm saying so far? यस यस सर. सर. It's not very difficult, it's just you have to do a little bit of work, right?
So finish this problem. Then we have question number 10 you should try. Question number 9 is easy only, I think. So you should try question 10 first. Question number 10 is saying, prove that triangle ABC is equilateral if and only if triangle ABC is equilateral if and only if cot A plus cot B plus cot C is root 3. Cot A plus cot B plus cot C is equal to root 3. Obviously, one direction is obvious, right? If you सर know वो कौन triangle सा is equilateral, then this is Yes, obvious. sir. The main A thing to B prove equal is the to C. opposite direction. If cot A plus cot B plus cot C is root 3, prove that triangle ABC is equilateral. Do you understand what I'm saying? यस सर Yes, sir. That is the more challenging step. That is what you need to try to figure out. This is the condition given to us. कॉट सी The first step here is to square it to remove the radical, to remove the root 3. So let's see what happens then. So you are getting cot square A plus cot square B plus cot square C plus 2 times summation of cot A cot B, terms like this, right, यस सर is equal to 3. Correct? यस सर Now, Yes, sir. what can we do here? So, समीशन कॉट ए कॉट बी की वैल्यू 1 है हाँ, summation cot A cot B की value 1 है because we know already that from the identity, right? यस सर So what we'll end up getting is this is going to be 2, so this is going to be 1, right? So we are यस getting सर cot square A plus cot square B plus cot square C is 1, correct? Yes, यस sir. सर Okay. So what is obvious from that? Hmm. So basically now we know that this summation is 1 and we also know cot A cot B plus cot B cot C, that is also 1, right? यस सर ओके This is सर also 1. माइनस कर देंगे Now we will subtract these two because right now what you have is a square plus b square plus c square is 1 and ab plus bc plus ca is 1, right? यस सर Yes, sir. So automatically if you subtract, you will be able to use the powerful algebra identity that everybody should be aware of. अगर ये चीज आ रही है
when you subtract it, you're getting 0, right? Yes, sir. This thing can be written as half of, you put the 2 Immediately. inside, right? Yes, sir. And then you can write this as the sum of squares. And there is a half outside. Yes, sir. So this is a standard identity and standard conversion. Because we got it as 0 here, we can say this is happening. But this can never happen unless A is equal to B is equal to C, right? Yes, sir. Yes, The sum of squares of numbers can be adding up to 0 only if each of them is 0, right? So Yes. A yes, and sir. all Got it. was, for us, it was all cot A, cot B and all, right? Cot A is equal to cot B is equal to cot C. Correct? Yes, Yes. sir. That means that now A and B and C, all the angles are same, and therefore this is an equilateral triangle. And we have proved the opposite side of the proof. The straightforward side is anyway pretty easy, the standard side. Do you Yes, understand sir. what I'm saying? Yes, sir. Understood. Okay. Uh, what I want you guys to do now is go through this whole sheet, whatever questions are there in this Allen module, all the exercises. I want you to just go through it. Don't have to do every question, but if any question feels like doubtful, you should do it. Okay. Yes, Okay, sir. The point of the thing is make sure that trigonometry basics are solid so that we can move on to next things in the next class. Okay. So yes, if you have any doubts, we'll discuss the doubts, but most likely we'll start trigonometric equations and go ahead in that next. ठीक है? okay. So just work on it, find out the problems, find out the doubts, and we'll continue from this point. Okay. Okay, sir. Next Okay. week's physics classes will also start. So Gaurav, you have already enrolled. We'll be starting physics for both 11th and 12th. Similar pattern, everything is same. The thing is that we'll start with electrostatics. Hmm? Sir, electrostatics, first chapter means electrostatics होगा. Starting 12th के चैप्टर से करेंगे. बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म portion. So we'll start with that. After we finish electromagnetism, we'll come back to mechanics. So electromagnetism basically covers like chapter 29 to chapter 40 in HCV. Yes, sir. 1/4 portion. Yes. So this is very important part of the syllabus. We'll start with that. We'll come back to mechanics later, but our first priority will be finishing electromagnetism properly. And we'll be starting from this also because Gaurav, you have not done these chapters, right? Yes, sir. So you've not done these chapters, so those are the first things we'll do. 12th grade syllabus will be done first, 11th grade syllabus will be done afterwards. So the sequence of chapters in physics, we have only 1 year, so we have to do everything. So we'll do it in this order, 12th grade and then 11th. सर उसमें मतलब आप Yes. डिस्कस क्या करोगे, एचसीवी और एनसीईआरटी? NCRT is not there to be discussed. We'll discuss HCV and problems, PYQs, problems. There is a Google Drive that has been shared for that. There are modules, Allen modules that can be done. There are a lot of test papers that we have to do, all of the same things. There are a lot of things to be discussed. Yes, sir. ऐसा थोड़ी है कि कुछ डिस्कस करने के लिए ही नहीं है फिजिक्स में. बहुत यस. सारा चीज है करने के लिए. HCV का डिस्कस करना है, एलन मॉड्यूल्स में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो डिस्कस करना है, PYQs करने हैं, बहुत काम है. टेस्ट पेपर्स अगर तुमने देखा होगा तो 100 से ऊपर है ना उसमें भी. सर ये जो मैथ्स में टेस्ट पेपर, ये मतलब हमको चैप्टर खत्म होने के बाद करने क्या, कि मतलब पूरा सिलेबस के बाद, नहीं, मतलब उतना दोनों? दिन वेट नहीं करना है. सिलेबस के बाद वेट करते जाओगे तो कब आएगा वो टाइम, सोच रहे हो?
यस सर, फिर तो कम ही टाइम बचेगा। आपने बोला था अक्टूबर नवंबर, तो फिर 1 महीना 1.5 महीना बचेगा। उतने टाइम में नहीं कर सकते हो, अभी से करना है टेस्ट पेपर्स। मैथ्स में तुम तो ड्रॉपर हो, तो तुमने तो सिलेबस एक बार किया है ना भाई। सर मतलब मैंने, हाँ, कुछ चैप्टर्स बेसिक से करे, बाकी हाँ बहुत सारे चैप्टर करे अच्छे से। जैसा भी किया है, लेकिन किया तो है ना, बेसिक तो किया है ना। यस सर। तो तुमको तो अभी से शुरू कर देना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। देखो, जिस बंदे का सिलेबस एक बार खत्म हो गया है, कैसा भी लेवल पे खत्म हुआ हो, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे तो हुआ होगा, राइट। यस सर। तो वो जो टेस्ट पेपर्स मैंने शेयर किए हैं तुम्हारे ड्राइव में, वो टेस्ट पेपर्स तुमको अभी से शुरू से करना चाहिए, एक सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस में इसलिए क्योंकि ताकि तुमको पता रहे कौन कौन सा किया है, कौन कौन सा नहीं किया, राइट। यस सर। सर वो फुल सिलेबस है कि मतलब सिलेबस वाले भी? कोई कोई क्वेश्चंस पार्ट सिलेबस है, कोई कोई फुल सिलेबस है, कोई कोई सिलेक्टेड चैप्टर्स का है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो एलन के टेस्ट पेपर्स है, राइट। सो जी। वो टेस्ट पेपर्स तुमको शुरू से एक सीक्वेंस में करना चाहिए। जो जो पोर्शन तुम कर सकते हो, बस अगर मैथ्स के लिए प्रिपेयर करो तो मैथ्स सेक्शन सबका करना शुरू करो, जैसे सर जैसे कर। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में भी कर सकता हूँ ना मतलब? हम मना थोड़े है। समझ रहे हो मैं क्या ओके बोल रहा सर। हूँ। यस सब सर। चीज कर सकते हो, लेकिन अगर मैथ्स की क्लास होगी तो मैं मैथ्स के ही डाउट्स डिस्कस करूंगा, राइट। जी यस सर। सर। लेकिन करना ऑलरेडी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तुम देखोगे 200 प्लस होंगे हमको लगता है। कितने पेपर्स हैं, बहुत हैं। बहुत। यस यस। सर। हाँ, तो उतना हम लोग बाद में नहीं कर पाएंगे, अभी से करना शुरू करोगे तभी तुम कुछ कुछ डाउट्स पूछ पाओगे। देखो, पॉइंट ये है कि जेई के एग्जाम लिखने टाइम में, अगले साल जब लिखोगे एग्जाम, उससे पहले तुमको इतने टाइप के क्वेश्चन देख लिख चुके होने चाहिए कि ऐसा नहीं लगे एग्जाम में सरप्राइज हो गए। यस सर। एग्जाम के दिन पे सरप्राइज होना इज द वर्स्ट थिंग। एग्जाम के सर दिन लगना चाहिए कि बोरिंग सा था, सब तो पता ही था। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। यस यस सर। सर। तो अभी से बहुत सारे पेपर्स हैं, अटेम्प्ट करते जाओ, जो भी डाउट आएगा डिस्कस करेंगे। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं हेल्प कर दूंगा, राइट। यस सर। यस सर। लेकिन वेट करोगे बहुत दिन तक तो फिर टाइम नहीं बचेगा, समझ रहे हो ना। यस सर। तो पेपर्स इसीलिए शेयर किए हैं कि ऑलरेडी तुम स्टार्ट कर दो अटेम्प्ट करना। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन अभी तुम नहीं बना पाओ, लेकिन ट्राई तो करो, देखो तो, कोशिश तो करो, यस सर। अभी बोर्ड राइट। से फ्यूचर करता हूँ, थोड़ा कैलकुलस भी आगे बढ़े। हाँ, जो भी अभी अभी तुम्हारा बोर्ड वोर्ड है, जो भी है ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइम मिले, जैसे ही मौका मिले, तुमको अटेम्प्ट करना चाहिए। जितना हो सके करो। सारे क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें भी पता चलेगा कि ऐसा ऐसा आता है, नहीं भी सॉल्व यस होगा सर, तो बहुत थोड़ा सारे फायदा टाइप होगा। क्लियर हो जाएंगे। यस सर। क्या बोल रहे हो। बहुत सारे टाइप ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, मतलब देख देख के भी। हाँ, और डाउट्स जो भी आएंगे तो बता दोगे, तो फिर अगली क्लास में डिस्कस हो जाएगा वो। यस। ठीक है, तो वो सब सब इसीलिए शेयर किया गया है कि ऑलरेडी तुमको खुद से करना शुरू करना है। अभी अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं जब मैं बोलूंगा तभी करोगे, राइट। यस सर। यस। तुम्हारा एग्जाम है, तुमको प्रिपेयर करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुमको ट्राई करते जाना है। जब कोई हेल्प चाहिए होगा तो पूछो फिर। यस सर। सर अगली क्लास कब होगी? संडे। संडे को सर? हम्म। ओके सर। ओके, फाइन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास देन। ओके सर। थैंक यू। बाय। थैंक यू। बाय सर।